Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic 10.3 of the chapter number 10, simple harmonic motion and waves. And the topic that is under discussion is wave motion, types of wave and the types of mechanical waves. So we discuss these topics one by one. First of all, we have to define wave. What is wave? A wave is the disturbance that carries energy through matter or space. What is matter here? Matter through which a wave travels is called its medium. Students, you are already familiar with the matter. You have studied in previous class that a matter, we can define matter, anything that occupies space and has mass is called matter. And the matter has four states: solid, liquid, gas, and plasma. So, wave travel energy and energy spread out as it travels. वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है जैसे जैसे वो ट्रेवल करती है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर. वेव क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है और वो मैटर जिसके थ्रू ये वेव ट्रेवल करती है वो उसका क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है. Now we will discuss the medium. Look at these examples. In the first example, what is the medium here? Do you know what is the medium here? Water. In this figure, the water is the medium for the travel. In the second figure, what is the medium to travel wave? The medium is air. Now, we will discuss the wave motion in detail. You know, wave play an important role in our daily life because wave are the carrier of energy and information over the long distance. Okay, wave requires some oscillating or vibrating source because without source, wave do not oscillate. Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibratory motion of object. The two activities are given here in your textbook page number 7. These two activities shows that the wave requires medium for their propagation and production. The first activity In the first activity, look at this figure 10.6. The wave produced by a dipping pencil in a water tub. How a wave produced by dipping the pencil? So we will discuss it. Dip one end of the pencil into a tub of water and move it up and down. जब आप एक पेंसिल को डिप करेंगे उसके एक एंड को और अप एंड डाउन मूव करेंगे तो यू विल सी द वेव्स आर प्रोड्यूसिंग. वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो उस सोर्स से आउटवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगी. अब अगर हम उसके रास्ते में एक कॉक रख देते हैं, एक छोटा सा कॉक, एक पीस ऑफ कॉक रख देते हैं तो क्या होगा? जब वेव्स उस कॉक तक ट्रेवल करके जाएंगी तो वो भी अप एंड डाउन मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे, उसी जगह पे, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा. That's why the net distance of the cork is 0. और जब वेव्स उस तक पहुंच के उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाएंगी तो ऑसिलेट करवाने के बाद वेव क्या हो जाएंगी? ट्रेवल कर जाएंगी आउटवर्ड. लेकिन कॉर्क का तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा और कॉर्क अपनी रिपीट करेगी अपनी वाइब्रेटरी मोशन को अबाउट इट्स मीन पोजीशन. इस एक्टिविटी ने क्या शो किया कि वेव एनर्जी कैरी करके लेके गई और उस कॉर्क को इतनी एनर्जी मिली कि उसने अप एंड डाउन ऑसिलेट किया, लेकिन वेव फिर क्या होगी? उससे आउटवर्ड ट्रेवल होगी. एंड इन द नेक्स्ट एक्टिविटी 10.2, look at the figure. In this figure, a rope is shown. आपने क्या करना है? अपने हाथ में एक रोप को लेना है एक एंड से और दूसरे एंड को एक स्पोर्ट के साथ फिक्स्ड कर देना है और उसके ऊपर एक पॉइंट पी मार्क कर देना है. जब आप उसके ऊपर पॉइंट पी मार्क करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? रोप को फ्लिप करेंगे अप एंड डाउन, जैसे इस फिगर में शो किया जा रहा है. जब हम उसे अप एंड डाउन फ्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि वेव्स इसके अंदर भी सेटअप हो जाएंगी और जब वेव इसके ऊपर सेटअप होंगी तो वो ट्रेवल करना शुरू कर देंगी किस तरफ? फिक्स्ड एंड की तरफ.
क्योंकि हमारा सोर्स हमारा हाथ है, हमारे हाथ की एनर्जी इसको मिली, जो हमने इसको ऑसिलेट करवाया, जो वेव सेटअप हुई वो किस तरफ ट्रैवल करेगी, स्पोर्ट की तरफ ट्रैवल करके जाएगी। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेव सेटअप हो गया है और हमारे पास ये मूव करके जा रही है? तो ये जो पॉइंट पी आपने मार्क किया इस रोप के ऊपर, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा अप एंड डाउन जैसे जैसे इसमें से वेव पास करेगी। तो ये जो पॉइंट पी है, द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। जिस तरफ वेव की मोशन हो रही है, इस पॉइंट पी की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये पॉइंट पी तो अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा, लेकिन वेव की डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड द स्पोर्ट है। इन दो एक्टिविटीज का क्या कंक्लूजन है, आपको क्या पता चलता है कि वेव आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, but the wave requires some oscillating source. In the first activity, the source is the pencil, and in the second activity, your hand is the source to produce wave. I hope you got it well. Now, we will discuss the types of wave. Wave के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया. Now, the types of wave. There are basic two types of wave, mechanical waves and the electromagnetic waves. That is given in your textbook. Now we discuss one by one what are mechanical waves and what are electromagnetic waves. Mechanical waves are those waves that require a medium to travel through. जब तक कोई मीडियम नहीं होगा, मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव. For sound wave to travel, there must be a medium because sound cannot travel through vacuum. And in electromagnetic wave, these waves do not require a medium. These waves can travel through vacuum. For example, light waves. Now we discuss the types of mechanical wave. Mechanical waves की कौन-कौन सी type है हमारे पास? The first one is transverse wave and the second one is longitudinal wave. The first one, transverse wave, is the wave that causes particle of the medium to vibrate perpendicular to the direction of wave travel. जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करके जा रही होती है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल जो है मीडियम के वो वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल. Look at this figure. This figure shows how transverse waves are traveling. I hope you understand it. Now we will discuss the characteristics of transverse wave. This is the figure of transverse wave. Crest. What is crest? The highest point. This is the highest point of a wave. This highest point is called crest. The lowest point. The lowest point is called trough. Amplitude. Greatest distance that particle of a medium moves when a wave passes. Amplitude is the large distance, greatest distance that the particle on a medium move. What is wavelength? Distance from one crest of the wave to the next, from one crest to the other crest. The distance between these two consecutive crests is called wavelength and it is denoted by lambda. What is frequency? The number of full wavelength that passes a point in a given time. In a given time, the number of full wavelength that passes through is called frequency. This figure also shows the characteristics of transverse wave. Look at this figure. The highest point is crest, this is trough, and the distance between two consecutive crests is called the wavelength, and it is the height of wave. Maximum the height, maximum amplitude will be. What are the rules which should tell us that which wave carry much energy? So, if the amplitude of the wave is high and the wavelength is short, wave carry much energy. But if the amplitude is low and the wavelength is long, then the wave carry little energy. Now check that there are two waves are given. You have to think about it that which wave carry much energy. So look at this figure. In this figure,
These are high amplitude and the wavelength is short. The distance between two crusts is very small. But in this wave, there is a large distance between two consecutive crusts. It means the wavelength is long and the amplitude is low. So, which wave carry much energy? Yes, this one wave. This wave carry much energy. I hope you understand it. The second type of mechanical wave is longitudinal wave. In the longitudinal wave, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave. It means in longitudinal wave, the particle of the medium vibrate parallel to the direction of wave travel. इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो particles हैं वो parallel move करते हैं, vibrate करते हैं parallel to the direction of wave travel. Look at this figure. We produce the wave with the help of a tuning fork or you can produce the wave with the help of a slinky. जब हम इसे बैक एंड फोर्थ मूव करवा रहे हैं तो क्या होगा, ये वेव जो इसके अंदर जनरेट होगी, जो वेव प्रोड्यूस होगी, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो रीजन हमें नजर आ रहे हैं. एक जगह पे तो पार्टिकल काफ़ी क्लोज हैं और एक रीजन में पार्टिकल्स क्या हैं, स्प्रेड हुए हुए हैं. और ये जो दो रीजन्स हैं, कंसेक्टिव टू रीजन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, वेव लेंथ कहलाएगा. अब हम देखते हैं कि ये रीजन्स क्या हैं, क्या characteristics हैं longitudinal wave की. So, the characteristics of longitudinal waves are the two characteristics, compression and rarefaction. The compression are the area where the particles are close together and the rarefaction are the area where the particles are spread out. Look at this figure. In this figure, in this area, the particles are very closed and it is called the compression. As this word is come from the word compress. Compress का क्या मतलब होता है, दबाना. तो यहाँ पे भी compression का क्या मतलब है, compression का मतलब है कि particles compress हुए हुए एक दूसरे के बहुत ज़्यादा close हैं. लेकिन वो एरिया जिसमें particles spread हुए हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं, वो एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, rarefaction कहलाता है. This wave is moving in this direction. ये जो wave है इस डायरेक्शन में मूव करके जा रही है, जो डायरेक्शन आपको शो की जा रही है, और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं. जैसा कि आपने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. वो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो उसके पैरेलल ट्रेवल करेंगे. इसकी एग्जांपल हमने क्या देखी, साउंड वेव्स. साउंड वेव स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम इट इज इन. अब साउंड वेव की स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. आइदर इट इज़ मूविंग इन एयर, वाटर और एनीथिंग एल्स. लाइक इसका मीडियम जो है वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 3 मल्टीप्लाइज फास्टर देन, मतलब 3 times फास्टर देन एयर. And in solid 15 to 20 times faster than in air. मतलब आपको तीनों पार्टिकल में, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों मैटर की स्टेट्स में, तीनों मीडियम्स में बता दिया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी. This is very easy topic, student. I hope you all understand it properly and got it well. This is a home task that learn this topic carefully. Thank you. Stay safe and Allah Hafiz.